Good morning, students. Students, as we were discussing about epithelial tissue in our previous video, and I told you that epithelial tissue is a kind of protective tissue which is single layered or basically mostly single layer, and the cells of this tissue are having without intercellular space. And I mentioned you that on the basis of the layers of the cells present in it, epithelial tissue can be classified into two types: simple epithelium and compound epithelium. And we discussed about simple epithelial, and as I mentioned that on the basis of their uh, shape of the cells, we can say that the epithelial tissue is of different types. I told you that the flat cells are, if the cells are flat, then the tissue is squamous. If the cells are of cuboidal shape, then it is called cuboidal epithelial. When the cells are long, cylindrical, ठीक है, elongated cells, then it is called columnar. If the cilias are present at the top or free surface of the epithelial tissue, it is called as ciliated epithelium. So I am continuing that same topic. Sometimes what happens, some of the columnar or cuboidal cells of the epithelial tissue get specialized for secretion and are that's why called as glandular epithelium. I mean to say that कभी कभार क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू है कौन सा वाला, कॉल्यूमनर या क्यूबॉइडल, ये कुछ स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ये कुछ डिफरेंट फंक्शन शो करने लगता है. नाउ दिस बिकम्स स्पेशलाइज्ड फॉर द सिक्रेशन of various things, then it is called as glandular epithelium. Now glandular जो है ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा एंड इट मे बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये दो टाइप का हो सकता है. इट माइट बी यूनिसेलुलर, ठीक है. यूनिसेलुलर मीन्स अ सिंगल सेल आइसोलेटेड सेल forms a glandular cell and releases its secretion, like goblet cells. Goblet cells are present, this is very important term, GOBLET, goblet cells. These cells are present in your alimentary canal and are responsible for release of different kinds of secretions. ठीक है, तो ये तो था यूनिसेलुलर कंडीशंस. एज आई मेंशन दैट समटाइम कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं, मॉडिफाई होती हैं, एंड दे बिहेव लाइक ए ग्लैंड. ठीक है, एंड दे आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड फॉर रिलीज देयर सिक्रेशन. तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, यूनिसेलुलर like goblet cells present in the alimentary canal, and sometimes these are multicellular or these glandular cells are present in a cluster. ठीक है, क्लस्टर फॉर्म में ये होती हैं, लाइक सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन योर माउथ. ठीक है. नाउ इतना तो अब हमें पता चल गया कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है दीज आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. ठीक है. नाउ द ग्लैंड्स विच आर रिलीजिंग देयर सिक्रेशन और पावरिंग देयर सिक्रेशन कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. ना अभी जो ग्लैंड्स होती हैं, क्योंकि ये आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल जो है ग्लैंड्स को बना रहा है, एंड दीज ग्लैंड्स विच आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड मे बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. एंड how can we say that these are of two different types? So we can say that on the basis of the mode of the powering their secretion, glands are divided into two category, exocrine and endocrine. ठीक है. नाउ किस तरह से अपने सिक्रेशन को रिलीज़ करनी है, किस तरह से पोरिंग करनी है, पोर मतलब करना और रिलीज़ करना किसी चीज़ को. ठीक है. तो वी कैन से दैट दीज आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. Now what is the difference between endocrine and exocrine? I am telling you that the gland which is releasing their secretion in a tube, and then finally that tube is releasing that particular secretion in the specific location, then it is called exocrine gland. Like your salivary gland, saliva is produced in the salivary gland, then it is passing in some tubes, and then finally it is releasing into the mouth. Similarly, your liver is a exocrine gland. Liver is producing bile juice. From liver it is passing into the hepatic duct. Hepatic duct is releasing into the small intestine. ठीक है. Similarly, pancreas sometimes behaves like endocrine and sometimes behave like exocrine, how I am going to tell you later on. And on the other hands we have endocrine glands. Endocrine glands are those glands which are releasing or pouring their secretion directly into the blood stream. इनको किसी डक्ट या ट्यूब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपना सिक्रेशन को रिलीज करने के लिए. They are directly pouring their secretion into the blood stream, like various endocrine glands. I am going to tell you that, like in your brain pituitary gland is there, hypothalamus is there, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, and I told you that pancreas के पास भी एक specific region होता है which is called as islets of Langerhans. तो rest of the region of pancreas is called as exocrine,
जो कि पैंक्रेटिक जूस को आपका पैंक्रेटिक डक्ट में रिलीज़ करता है। पैंक्रेटिक डक्ट आपकी हेपेटिक डक्ट में मिक्स होती है, देन वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ करता है। तो वहीं पैंक्रियाज के पास एक रीजन है जिसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इट बिहेव्स लाइक अ एंडोक्राइन gland which releases its secretion directly into the blood stream. ठीक है, so there are two types of glands, exocrine, which are releasing their secretion directly, sorry, which are releasing their secretion into ducts or tubes. In contrast, the other glands are called endocrine glands, which do not have any kind of duct, and they release or they secrete their secretion directly into the blood stream. ठीक है, so this is all about glandular epithelial tissue. Now I am coming to the last one, compound epithelium. Now, in contrast of simple epithelial tissue, compound epithelial tissue is made up of more than one layer. तो यानी कि हमने देखा था जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है। वहीं पर ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इट इज़ कंपोज ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल्स। ठीक है, एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो इनका जो मेन फंक्शन है ये केमिकल्स के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी देता है। ठीक है, और इसके अलावा मैकेनिकल जो स्ट्रेस है उसके अगेंस्ट रेजिस्टिविटी देता है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, फेरेंक्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स। तो ये आपकी कई जगह पर आपकी लोकेशन पे स्किन पे आपको कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू देखने के लिए मिलेगा। बकल कैविटी की जो मॉइस्ट लेयर है उसमें आपको कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। फेरेक्स की लेयर है। ठीक है, सिमिलरली द इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। हेयर इन दिस फिगर यू कैन सी आउट that how the multiple layers are present in the compound epithelial tissue. ठीक है, now the last one topic, all cells in the epithelial cell held together with a little intercellular space. I told you earlier all that कि मैंने कहा इंटरसेलुलर स्पेस बहुत लिटिल होता है, तो बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं जो सेल्स होती हैं इंटरसेलुलर जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होती हैं। ये नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन द इंडिविजुअल सेल। इट मीन्स कि दो सेल्स जिनके बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस है उनके बीच में कुछ स्पेशलाइज जंक्शंस होते हैं। जंक्शंस मतलब जॉइंट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस विच आर फाउंड बिटवीन द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू और द एपिथेलियल टिश्यू एंड अदर टिश्यूज। ठीक है, नाउ व्हाट आर दीज आर कॉल्ड एज टाइट जंक्शंस, adhering junction and gap junctions. So one by one I am telling you about the function of all the junctions. There are three types of junctions: tight junction, adhering junction and gap junctions. ठीक है, तो टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेज फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। यानी बहुत टाइट होते हैं, यानी एपिथेलियल टिश्यू से होकर किसी भी फ्लूइड को बाहर निकलने से रोकते हैं, यानी ये आपका लीकेज को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। वहीं जो दूसरा होता है दिस इज कॉल्ड एडहेरिंग जंक्शन एंड इट परफॉर्म्स सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल्स टुगेदर। तो दो सेल्स को बीच में आपस में बहुत टाइटली पैक कर देते हैं तो उनको जोड़ने का काम करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है एडहेरिंग। ठीक है, दीज परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल्स टुगेदर। तो दो नाइबर सेल जो हैं उनको आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में रखने में मदद करती हैं। लास्ट वन आर कॉल्ड गैप जंक्शंस। गैप जंक्शन facilitate the cells to communicate with other by connecting their cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. तो it means जो आपके गैप जंक्शंस हैं, ठीक है, these facilitate the junction और द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट सेल्स। यानी दो एडेरिंग या दो नाइबरिंग सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन को पास ऑन करने का काम करते हैं। ठीक है, दे कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट सेल्स। ठीक है, एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिगर मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज ऑल इनफ अबाउट epithelial tissue. I hope so कि epithelial tissue का concept is absolutely clear. If still you are feeling any difficulty, please contact me. Thank you. Bye bye. Have a nice day.